अरे सुनिए, अब दिल्ली की गलियों में और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में एक ही नाम गूंज रहा है, जस्टिस सूर्यकांत। जी हां, वही जज जो 24 नवंबर को देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। कहते हैं इनकी कलम में आग है और शब्दों में वजन। लेकिन सवाल यह है कि जब न्याय की कुर्सी का सबसे ऊंचा सिंहासन उनके सामने होगा, क्या ये आग सिस्टम की जड़ तक जाएगी या फिर सिर्फ धुएं का एक नया बादल बनेगी? जस्टिस सूर्यकांत की पहचान बनी तेज दिमाग और तेजतर फैसलों से। हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर आसान नहीं रहा। याद कीजिए वही केस जिसमें उन्होंने कहा था सरकार कानून बना सकती है लेकिन संवैधानिक सीमाओं के बाहर नहीं जा सकती। वो लाइन आज भी गूंजती है। एक वाक्य में कहे तो ये जज हाँ कहने वालों में से नहीं है, ये क्यों पूछने वालों में से है। अब बात करें उनके सरकार विरोधी और सरकार पक्षीय फैसलों की, तो जनाब सूर्यकांत ने कई बार दिखाया कि वो सिर्फ सत्ता की नहीं, संविधान की सुनते हैं। याद है 2021 का किसान आंदोलन वाला केस, जब सरकार दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेड्स के पीछे किसानों को रोक रही थी, तब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा था, क्या लोकतंत्र सिर्फ पीवी डिबेट तक सीमित रह गया है? ऐसा कहना उस वक्त किसी धमाके से कम नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार ने अपने रुख को कानूनी दायरे में रखा, तो उन्होंने साफ कहा, सत्ता को पूरी तरह दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी जनता की भी है। ना तो पूरी तरह एंटी गवर्नमेंट, ना ही प्रो गवर्नमेंट, बल्कि एक बैलेंस्ड स्केल जो न्याय की नोक पर पिका है। सूर्यकांत का एक और बड़ा फैसला था आंध्र प्रदेश बनाम केंद्र सरकार विवाद, जहां उन्होंने कहा था कि राजनीतिक असहमति को प्रशासनिक बाधा नहीं बनना चाहिए। ये लाइन उस दौर की थी जब हर राज्य अपने हक की लड़ाई को दिल्ली बनाम बाकी भारत बना चुका था। ऐसे वक्त में उनका ये फैसला बताता है कि वो सिर्फ कोड नहीं चलाते, वो सिस्टम को समझते भी है। अब जरा ध्यान दीजिए, जस्टिस सूर्यकांत वही है जिन्होंने राजस्थान सरकार बनाम बसवराज केस में कहा था कि अगर कोई अधिकारी जनता की आवाज दबाता है तो वो संविधान के खिलाफ अपराध करता है। ये लाइन आज भी विसल ब्लोअर्स के लिए एक उम्मीद की तरह है, यानी वो न्याय को सिर्फ सजा तक नहीं बल्कि सुधार तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन भाई, जब बात आती है राजनीतिक मामलों की, तो वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और यहीं पर जस्टिस सूर्यकांत ने कई बार दिखाया कि वो सिस्टम की नब्ज जानते हैं। कभी उन्होंने ईडी और सीबीआई की शक्तियों पर सवाल उठाए, तो कभी सिविल लिबर्टी की हिफाजत की बात की। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था, लोकतंत्र में जांच एजेंसियां डर की वजह नहीं, भरोसे की वजह होनी चाहिए। अब सोचिए, ऐसा जज जब मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठेगा तो कई दरवाजे खुलेंगे और कुछ दरवाजे बंद भी होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में 2026 के चुनाव, मीडिया ट्रायल और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, ये सब उनके ही कोर्ट के सामने आने वाले हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या जस्टिस सूर्यकांत उस दबाव में झुकेंगे या वही कहेंगे जो उन्होंने हमेशा कहा, संविधान सबसे ऊपर है? और जानिए मजेदार बात, कुछ लोग कहते हैं सूर्यकांत जस्टिस गवाई से ज्यादा मुखर है। मतलब जो बात गवाई सोचकर कहते हैं, सूर्यकांत बिना झिझक बोल देते हैं। सिस्टम में ऐसे लोग कम हैं जो ना कहना जानते हैं, और यही उनकी ताकत भी है और जोखिम भी, क्योंकि सत्ता को चुप जज पसंद है, सवाल करने वाले नहीं। तो अब देखना यह है कि जब 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी बदलेगी, तब न्याय की भाषा भी बदलेगी या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल छोटा जरूर है, करीब 14 महीने का, लेकिन इन 14 महीनों में वो ये तय करेंगे कि क्या न्यायपालिका फिर से जनविश्वास का चेहरा बन सकती है या नहीं। क्योंकि जैसा उन्होंने एक बार कहा था, न्याय में देरी भी अन्याय है और डर के साए में दिया गया न्याय तो सिर्फ दिखावा। मिस्टर राकेश खन्ना, सीनियर एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, रिस्पेक्टेड मीनाक्षी जी, सीनियर एडवोकेट, Shri Sharma, Senior Advocate, Vice President of the Bar Association, other office bearers of the Supreme Court Bar Association, senior advocates and members of the bar.
I am thankful to the Supreme Court Bar Association for giving this opportunity to exchange the ideas on a subject which is very close to our hearts. Whether the lawyers or judges, we all are concerned about the access to justice. What was begun with by Shri Khanna, Meenakshi ji concluded with a very deep insight of the Constitution and judgment of this court, explaining the very concept of access to justice, what are its ingredients, and what is required to be done to achieve this loud goal. The question of wanted infrastructure, the question of requisite strength of the judges to meet with the judge litigation ratio, the question of geographical distance, which has become a stronger factor to dissuade the litigant to come and approach the judicial forms, and several other issues which have been really identified as the barriers for the access to justice have been very well explained by Meenakshi ji. Therefore, I need not to repeat all those issues. As you know it, the Roman saying that whenever there is a wrong, there has to be a remedy is the foundation basis when the concept of access to justice started developing. 1948 Human Rights, International Human Rights Declaration, and eventually followed by our own Constitution through Article 39A. Several legislations, Legal Service Authorities Act, Constitution of Nalsa, State Legal Service Authorities, and going up to taluka level, appointments of, very briefly I am pointing out, even the paralegal volunteers and what not and what else. All these efforts have been made to achieve this goal of access to justice. I had a special privilege to work for 2 consecutive terms as a member of the Managing Committee of NALSA from 2007 to 2011, and you will find that most of the schemes formulated by NALSA are notified in 2010. I did contribute information of those schemes, but I am not on that academic concept of the access to justice. The last point which Meenakshi ji raised before you, the most pertinent point, that where and how are we going wrong in translating this concept into reality? Where are we lacking in practical terms that the concept of access to justice is still being discussed in workshops, seminars, lectures, in auditoriums? Why it has not reached to the general masses? And what are those actual barriers and how to deal with that? She very aptly pointed out and made a appeal to all of you that the lawyers need to come out, pro bono services, even young lawyers who can be funded from different sources, and they can provide a kind of paid but free legal aid to the set of litigants who, because of the economic constraints, are unable to approach the legal forms. There is no doubt about it that free legal aid
accessible justice system and equality in terms of no difference between poor or rich, workman or industrialist, employer or employee. All these are fundamental to the concept of access to justice. But then my personal viewpoint is that we are lacking in commitment. And unless you are committed to a cause, regardless of the best of the infrastructure which is made available, regardless of all other requirements are taken care, funds provided, you may not be able to achieve the desired result. On illustrative basis, I will just give you one example. I have been also the executive chairman of the State Legal Service Authority, and it was not that Legal Service Authority alone as an exception. I am talking all India basis, pan India. There are more than adequate funds being provided by the central government to legal service authorities for the purpose of engaging good quality advocates, pay them a reasonable amount of fee, where only NALSA has prescribed the minimum one, and ensure that the trust and faith of the litigant who is not in a position to afford legal services of the private lawyer, that is restored and built up, and they are also attracted to engage the legal services, legal aid, the advocate of their choice through the platform of legal services. And practically and factually what's happening is that many legal service authorities are unable to utilize the fund, and there is an annual return. The amount is returned to the state governments or the central government or the other agencies from where it comes, all government agencies only. My personal very strong view is that the concept of access to justice, legal aid, legal services cannot be implemented mechanically through rule books or through prescription. It has to be imbibed in the mindset, and there has to be a commitment by individuals forming a group and then take it and lead it as a movement. Access to justice actually is a very innovative idea. Where, how, in what circumstances, and what type of access to justice you need has to be invented and seen and implemented, translated then and there. There are situations where as a advocate, as a counsel for the party, or as a judge, if you start perceiving yourself to be bound down by the rule book, and if you continue to involve yourself in the adjudicatory process, keeping in view in mind the litigant who is before you, or the brief or the file which is before a judge, mind you, it may lead to gross violation of access to justice. May not be to that litigant, but to thousands or hundreds or so many other individuals. That's why in one of the conference of Commonwealth Judicial Education platforms, I raised an issue. Fortunately, all big stakeholders from different Commonwealth jurisdictions were present. Indian judges were also there. Justice
Madan Lokur, as a sitting judge of the Supreme Court, was there. Professor Madhav Menon was alive and he was there. I raised an issue that have we ever thought of protecting the right of an invisible litigant? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।